Fawaz, Ali. It's a matter of great honor today that the organization with which I started my career 15 years back, when Confiz was a very small organization, they had projects like Waiter.tv and a UEFA Champions League website. I started my career with Confiz way back in July 2007, and today it's really a great, I feel honored that I'm using this platform and talking to you as a speaker. So thank you, Confiz, once again for inviting me today. It's a great, literally, it's a great honor for me. You guys have got my introduction. In past 15 years, I have just been one thing that I know is data, and the data I have been working. Literally, I have started working into data from Fox Pro technology, or Aaj I'm working in, Alhamdulillah, with all the recent trends and technologies and everything with Synapse, data lake architectures, the new technologies that are coming into this data world, which are like data mesh, governance. It's a big journey. I'll try to cover some of that, the evolution of data approach. That's our agenda today. Then the legacy data warehouse, the emergence of data lakehouse, and the last is two leading platforms. I thought that there will be students here in UMT. For them, it would be really very beneficial to understand that the two platforms in the data industry these days, Snowflake and Databricks. A bit introduction for those upcoming students into the market. Ye unke liye jana, I thought it can be very beneficial for them. And lastly, we'll discuss some of the upcoming concepts in our data field that inshallah when you guys will gonna graduate, और अभी current जो हमारी industry है उसमें इस पे बहुत ज़्यादा discussions हो रही है. So we'll discuss those at the end. So let us start. These are some few quotes and quotations that how the modern data landscape look today. One is Gartner and one is Forbes. इनमें जो currently data के बारे में कहा जा रहा है, how the world is getting into that. By 2022, 275 billion cloud computing marketing is there, and out of that, 80 billion investment as per the Forbes in the data platforms. 275 and out of that 80 billion makes like around 1/4 or somewhere between 1/4 and 1/5. So ये data की importance हो गई है आज पूरी दुनिया के अंदर data and analytics field की. But just एक चीज जब market में बहुत ज़्यादा in demand आती है, the thing that is growing very fast, so it brings a lot of challenges with it. बहुत ज़्यादा challenges आते हैं. The previous respectable speakers उन्होंने ML के challenges के बारे में बात की. From Algo we had that data quality से related. So yes, that has been recognized. The biggest challenge for the startups and for all these organizations is to select the correct technology paradigm, because if you have not gone through the right structure, then you will gonna structure. जब आपने base ही गलत रख दी, then obviously the building of that structure will not gonna be the good one. Lastly, 2021 was $215 billion that the companies invested in big data and business analytics worldwide. That's a huge investment. And not only that, it had been a 10% increment by 2020. Keeping in mind that 2021 was a COVID year. Businesses were shrinking all across the globe, but within the data and analytics field, it was a 10% increment. Now the world is COVID free, alhamdulillah. The businesses are back on track. So you can imagine that इस साल तो जो growth है वो far more than 10% it's expected. Let's start with evolution of data approach. Way back in late 1980s, the director of UMT, he mentioned that there was no approach of data at that time. But उस वक्त data warehouses के concepts आना शुरू हो गए थे. 80s and 90s के अंदर we had like Fox Pro, Oracle, फिर SQL Server 2000 आया. So that was
or the data concept at that time was we have got an external data, we have got operational data जो कि POS systems वगैरह में होता था, and उनके हम छोटे-छोटे data marts बना लिए, एक customer का, एक sales का, and try to get the BI and dashboarding reports. But with the passage of time, industry started that हमारे पास data है पिछले 5 साल का, 10 साल का, how we can predict, how we can start using it कि यार हमें अगले 4 साल में क्या करना है. I can tell you one very interesting example, and that was I was working with a customer in 2012 in the Benelux region, और उस customer ने एक नया warehouse बनाना था. They were a store like in the Benelux region, they were a store like Metro, हेमा के नाम से. They had like 2 options, either to invest and create a new warehouse ताकि उनकी supply line बेहतर हो सके, or they had their demand change application upgrade. दोनों की cost तकरीबन एक आ रही थी. They chose the demand change application upgrade, and after 6 months, their CIO quoted that it saved us around $25 million. अगर वो warehouse के ऊपर जाते, so they couldn't have tracked all that what is required. So with that emergence, machine learning, real-time data like in the telecom industry, live CDRs aa rahe hain, GPRS events, 3G, 4G events. So a new form of data that came into being was semi-structured and unstructured data. Any like PDFs के अंदर data होता था, indifferent. Emergence of data lake way back in 2011. BI and reporting से आगे आके the world started going into real time, machine learning and data sciences. Then from data lake entered this decade. We entered into this decade 2020, where कुछ problems जो कि हम आगे जाके भी करेंगे, emergence of data lake house आ गई. And why that data lake house came into being, we'll discuss it in the following slides. But please keep this picture in mind for the next 3 to 4 slides, that how the data from small data mart came into this way. ये छोटा सा comparison है between the structured and unstructured data, and the whole world of data इस बहस के ऊपर चल रही है. That what is a structured data and what this is the backbone concept for you guys to understand that what is a structured data and what is a unstructured data. अगर मैं आपको एक सादा उर्दू जुबान में समझाने की कोशिश करूं, what is a structured data, तो वो एक बड़ा तमीजदार सा क्यूट सा बच्चा है, बीबा बच्चा होता है, और वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है. और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, ये बड़ा बदतमीज किस्म का, बिगड़ा हुआ नवाब किस्म का होता है, किसी भी फॉर्मेट में मुंह उठा के सिस्टम में आ जाता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. You can't ignore that. And Gartner, which is considered as the Bible of data and analytics field, 80% of the data is unstructured in the organizations. 80%. So that's the importance of unstructured data. You can't ignore it. आपको उस बदतमीज बच्चे को ट्रेन करना है. And that is the duty of our data engineers and data architects, that okay, ये data आ रहा है, इसको हमें कैसे करना है. अच्छा बच्चा तो हर एक को अच्छा लगता है, वो तो आराम से बेचारा कोई तंग ही नहीं करता structured data का. This was the data warehouse. Structured data है, बैचेस चल रहे हैं, BI रिपोर्ट्स आ रही हैं, फाइनेंस को, मार्केटिंग को, हर एक को पता चल रहा है, अच्छा यार ये हमारे KPIs हैं, ये हमारे डैशबोर्ड है. एवरीथिंग वाज स्ट्रीमलाइंड. मार्केटिंग को रेवेन्यू का पता चल रहा है, बट हाउ द मार्केटिंग विल गोना प्रेडिक्ट कि यार मुझे कल एक नया पैकेज, मोबाइलिंग को कैसे पता चलेगा कि यार मुझे कल पैकेज लॉन्च करना है, तो उसके अंदर मुझे पैकेज की डेजिग्नेशन क्या करनी है, मुझे ऑन नेट मिनट ज्यादा करने हैं, ऑफ नेट मिनट ज्यादा करने हैं. अच्छा, जो मेरे यूजर्स हैं उनको मैसेजेस मुझे देने की जरूरत है, फ्री या नहीं फ्री, बिकॉज पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप. देयर कम द डेटा लेक. और क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिस तरह मैंने अभी कहा कि एक बहुत ज्यादा ह्यूज फॉर्मेट में था, एंड इट वाज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट, एंड यू नीड टू स्टोर इट. आपको यूज करना है, यू कांट इग्नोर द 80%. यानी
Unstructured data को ignore करने का मकसद, the meaning is that 80% of the data in your organization, you are saying, sorry, we are not using it. और आप बड़े key decisions से गलत आपके हो जाएंगे. What was the data lake? It was a centralized storage repository. Whatever the data you are getting, just store it in over there and get it and make it hard. All kinds of data again, one centralized location. Everything you are dumping, you're structured, you're semi-structured in the form of files, different file formats, XML, Parquet, JSON, so different formats. मैं ज़्यादा technical नहीं हूँगा, but try to be make it very in a nutshell. That was a raw data. बिल्कुल ही niche एक यानी एक जिस तरह टिश्यू पेपर का डब्बा हमारे आगे पड़ा हुआ है या बिल्कुल ही किसी ने पेपर से कोई नोट्स वगैरह बनाया. So it was a very raw data. फिर एक schema का concept होता है. It was schema on read. That what does the schema on read means? That when you start reading the file, then you analyze कि यार इसके अंदर चीजें क्या क्या हैं. इसके अंदर कस्टमर के लोकेशन पॉइंट्स हैं, इसके अंदर कस्टमर की जो है वो यूजेज है, इसके अंदर कस्टमर के FNFs, whatever the details that are coming in. Okay, but and that introduced the data lake introduced the concept of big data. 3 V's: volume, variety, velocity. Velocity, 1 minute you are getting 10,000 CDR transactions in a telecom world. Variety, आपको different किस्म के customers approach कर रहे हैं. In like Daraz application है, उसमें आपको different classes of your social backgrounds, high class, low class, वो approach कर रही है. आपको देखना है कि यार what they are trying to look for the offers, or they are just trying to use it for the ease कि यार हमें कहीं जाना ना पड़े, and we are doing the grocery and all that stuff. Volume again, massive, terabytes of data एकदम से आ गया है, उसको कैसे store करना है. In case of streaming data, जो Netflix है या कुछ Netflix में जिस आपका streaming का data आ रहा है, Netflix 1 मिनट में कितने ज़्यादा users use करते होंगे. That was a data lake concept. Data lake अपने साथ कुछ मसले भी लेके आया. That was the biggest was number 1, security. Data security के issues आना शुरू हुए लोगों को. Number 2, because data lake के अंदर आपके पास data बहुत ज़्यादा था, उसकी multiple copies बनना शुरू हो गई. एक warehousing के लिए, एक ML के लिए, like ML team अपना use case लेके आ रही है कि जी हमें इस data में से इस तरह का data चाहिए, हमें data warehousing वालों को जी BI और dashboarding reports के लिए, तो एक data को आप multiple processing कर रहे थे, multiple source output systems के अंदर दे रहे थे. Then came the concept of data lake house. It combined the concept of data lake and data warehousing. And the advantage of this was that you don't need to process the data 2 or 3 times. Similar kind of data. आपने एक data उठाया, उसके अंदर अपनी quality की, उसके अंदर अपनी cleansing की, और उसको उस हिसाब से the use case पे present करना शुरू कर दिया. आपकी processing power बची, आपका you saved your space, काफी कॉस्टली हो गए. इवन क्लाउड पे जाने से स्पेस बची नहीं. यू हैव जो लोग यहाँ पे क्लाउड पे Amazon या Azure पे काम करते होंगे, द ब्लॉब स्टोरेज एंड S3 स्टोरेज, इट कॉस्ट यू अ लॉट. तो अगर आप मल्टीपल कॉपीज एक ही डेटा की बनाते जा रहे हो, या अगर आप मल्टीपल लैम्डा फंक्शंस या Azure फंक्शंस लिख के एक ही डेटा को बार बार प्रोसेस कर रहे हो, सो इट इज गिविंग यू अ कॉस्ट. सो यू गॉट टू सेव दैट कॉस्ट. सो एसेट ट्रांजैक्शंस आ गई. सो कुछ further details and कुछ further technical points that help in the data. But the main concept behind the data lake house for everyone to understand was that combining the 2 legacy and the 2 different paradigms into one shift. And that it is. The figure over here, sorry, thoda colors, I guess you can see thoda colors iske, that you call data lake and data warehousing, you have combined into one data lake house, and you are doing your data science, ML and BI over here. Advantages from the data lake house was that data governance, data versioning, direct access to raw data, that
all solve the problem for us with the data lake house. A bit of deeper comparison between these things, that how data lake and data lake house had each other. The main difference, or the biggest difference, or the biggest advantage that data lake house or data lake had over data warehousing was the architecture, the decoupled architecture. कि आपकी processing power और आपकी storage, they were entirely independent of each other. आपको अगर एक चीज बढ़ानी है, like पुराने जमाने में जैसा कंप्यूटर्स में होता था कि अगर आपको एक खास हद तक आपको हार्ड डिस्क अगर आप बढ़ाते थे तो आपका जो सीपीयू प्रोसेसिंग पावर थी वो बैठ जाती थी, या आपको रैम भी उसके साथ इंक्रीज करनी पड़ती थी. नाउ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. आपको दिन में आपका 10 GB डेटा है, बट दैट नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग. आप अपना प्रोसेसिंग इंजन को सिर्फ बढ़ाएंगे विद इन द मॉडर्न डेटा लेक हाउस. I would like to spend some time on this thing because किसी भी चीज को या किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए the most important thing is the architecture. आप अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं या अगर आप कोई घर बना रहे हैं, so the most important thing is the architecture or the foundation layer. अगर आपने कमरे टेढ़े, यानी अगर आर्किटेक्चर में दीवारें ही आपने टेढ़े बना दी हैं, then the architecture is gone and the building will not gonna be the good one. These are some of the important critical success factors for an architecture that treat your data lake architecture similar to data warehousing. क्योंकि data warehousing में architecture की requirements थोड़ी जरा बेहतर होती, थोड़ी जरा वो थी, tight थी. Treat the architecture for your data lake house with the data warehousing principle, जिसमें आपके dimensional modeling के principles आ जाते हैं. उसके बाद there are some that know your data lake requirements, that आप exactly उसे achieve क्या करना चाह रहे हैं. Design a data lake internal architecture आपका different, आपने एक specific use case को करते हुए data lake नहीं बनानी. Maximum use cases you have to understand, like the algo CIO, he just mentioned that when they go to it, they understand the algos कि आपका real time में भी data आना है, आपका web से भी data आना है, so you need to understand those. The last and the foremost important thing, select the right platform. कि आपने अपना platform सही choose करना है. Currently अगर आप इस big data landscape को देखें तो बड़ा confusing सा कि यार infrastructure इधर है, analytics इधर, applications. How do I need to select? मैं कौन सा tool pick करूंगा? Sorry, just 3 minutes more. Sorry. मैं इसको कैसे pick करूंगा? Few of the things that the modern data platforms should have. आपको, these are some of the checklists that you should have in your hand when you are selecting your proper new technology platform. आपको multiple tools, like ये एक different के नीचे मैं Hadoop use कर रहा हूँ, ऊपर मैं कोई और tool use कर रहा हूँ. Try to pick those tools जो कि इन चीजों के अंदर some features, जो critical features हैं, जिसमें data marketplaces हैं. Data marketplace जिस तरह हमारा Play Store वगैरह है, the latest concept is the data marketplace where people share their data sets. COVID-19 का data set हर जगह use हो रहा है, every company is using that, so वो एक आया हुआ है. Data science के features हो, data engineering के features हो, analytics. So these are some of the modern data platform checklists that you should look into before you are selecting a proper platform and you move ahead. I wanted to spend some time, sorry we are short of time, but I wanted to spend some time on this Snowflake, which is one of the leading and in my eyes, one of the best data platforms at the moment. It's a completely SaaS product, software as a service on your cloud platform, Azure, GCP, all three major. That's the architecture. And the second one, which I personally feel is जो कि data lake के concept को लेके आया था और सबसे ज़्यादा use कर रहा है, the lake house platform Databricks. The most of the students today sitting at the back, inshallah, when you will gonna go into the market tomorrow, mark my words, ये दो Databricks and Snowflake, हर जगह आपसे पूछा जाएगा आपका Snowflake and Databricks पे आपका क्या knowledge है. These slides will gonna help you at that time. थोड़ा सा lake house architecture, that within how the Databricks lake house architecture goes into
It is a data lake which supports your structured, semi-structured data, and from that you can get your BI and ML use cases. The new data hashtags in our domain these days, which you will gonna listen a lot to industry professionals मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, they might be interested. Data governance. Obviously, जब कोई चीज expand करती है, you need to have that governance. So governance is like the constitution of data for your organization. Data ops, DevOps की तरह, the new rule, you have to go through the deployment of data ops. Data mesh. Data mesh is also a very good, is a new concept that आप अपने data को deferidated model में करते हैं, and data fabric tool, which is a distributed data environment which enables frictionless access to all the data departments. Sorry, we are short of time. कुछ discussions जो कि हम करना चाहते थे हम नहीं कर सके, but I guess this would have been beneficial. जितनी हमने की, it might have been beneficial for you. And any questions, feedback, and you're more than welcome. Thank you. So Fahad, please stay on the stage. So do we have any questions from the audience? So yes, Fahim would like to be, okay, you can use this. Thank you. So my question is, we discussed about lake houses and data lakes. So in terms of data governance and data quality, how do you see it is happening in the lake houses? Do you see decentralized? Do you see centralized? Do you see a hybrid combination of both? Can you comment, please? Well, data governance, it's a big umbrella. और इसके ऊपर पूरा एक chapter और पूरा एक topic है. And data quality, it's like a one small component within that data governance. आपका data governance के अंदर, क्योंकि in a simple words, data governance is the constitution of data. When you are defining a constitution, तो उसमें हर चीज के do's and don'ts and everything आती हैं. Data governance, yes, there are a lot of companies that claim that they have got the. अगर आपका tool set से related सवाल है, lot of companies they do claim that we have a data governance tool set, but they are providing multiple tools जो कि data governance के different components को use करते को cover करती हैं. In terms of data quality, yes, data quality has become a very important component because आपको जिस तरह मैंने एक example दी कि unstructured data आपको नहीं पता कि किस तरह का आ रहा है. Today in the market, Informatica EDQ, it's a very good data quality tool. एक और tool जो कि मैंने खुद personally use किया है, Donato. That is also a very good tool for the data quality. But आपकी data quality के लिए सबसे important चीज है business knowledge. अगर आप एक चीज को good या bad कह रहे हो या उसको refine करना है, then obviously you need to have those business rules defined. आपको जब तक ये नहीं पता कि यार, मैं आपको एक example देता हूँ that हम और उसमें different caveats भी आ जाते हैं. We were doing a use case और उसमें हमने map करने थे कि कितने ऐसे valid लोग हैं जिनका कितने ऐसे वैलिड लोग हैं. हम पंजाब गवर्नमेंट का एक यूज केस आया कि यार उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस है और जो CNIC का एड्रेस है वो सिमिलर है. मैं अगर इस हॉल में भी लोगों से हाथ उठवा लूं ना, तो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों, सॉरी टू से, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा एंड दे वुड बी ड्राइविंग अ कार और अ मोटर बाइक. और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, अनफॉर्चुनेटली उनके एड्रेसेस नहीं मिल रहे होंगे. अब अगर आपने उस, एंड नाउ दिस इज अ बिग डेटा क्वालिटी इशू. बंदा एक है, डिफरेंट एड्रेसेस है. सो आपको उस डोमेन के बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशंस यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू डिफाइन द क्वालिटी रूल्स कि अच्छा ये किस तरह के हैं. एक इंश्योरेंस, एक और कंपनी की एग्जांपल मैं आपको देता हूं. उनका डेटा क्वालिटी चेक्स उन्होंने अपने लगाए हुए थे. उन्होंने ड्राइविंग की कंपनी थी, उन्होंने अपने ड्राइवर्स के लिए ट्रक ड्राइवर की कंपनी थी बड़ी. इट्स डूइंग वेरी गुड बिजनेस इन पाकिस्तान, आई कांट नेम देम. उन्होंने अपने बिजनेस में एक लगाया हुआ था कि ड्राइवर को नंबर ऑफ किलोमीटर्स के हिसाब से हम रिवॉर्ड्स देंगे. वो एक ड्राइवर पिछले 3 हफ्ते से वो अवार्ड लेके जा रहा था बोनस का. चौथे हफ्ते जो उसने नंबर ऑफ आवर्स कोट कर दिए ना, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं थे.
ह्यूमनली पॉसिबल नहीं थे कि यार ये एक बंदा 3 हफ्ते से बोनस लेके जा रहा है ट्रक ड्राइवर, चौथे हफ्ते ये एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 14 घंटे ऑन एवरेज वो ट्रक चला रहा है। अब 14 घंटे ट्रक चलाने का मतलब यही है कि तो हेल्थ हैजर्ड आ गया ना, कि 14 से 16 घंटे। एनालाइज किया उसके डेटा को। अब उस कंपनी का प्रॉब्लम ये था, वो पोस्ट एनालिसिस कर रहे थे। इस यूज केस के बाद उन्होंने प्री एनालिसिस करना शुरू कर दिया। जब एनालाइज किया उसके डेटा को, तो उस बंदे के कोऑर्डिनेट्स को, जब कोऑर्डिनेट्स को देखा गया, आप यकीन कर सकते हैं उस बंदे ने अपने उन्होंने वो मीटर दिया हुआ था कि आप ये अपनी मोटर व्हीकल के ऊपर लगाएं एंड रन इट आउट। वो मोटर व्हीकल, वो जो मीटर था, वो अपनी बाइक पे लगा के लाहौर के एलसीसी ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था। And that was how he was doing it. So now there comes the data quality check कि यार, और business rule भी आया कि यार they understand the business problem कि यार we could be faked out like this. So this is how much the data quality checks at the time of making a decision are important. और ये तमाम की तमाम चीजें, data quality हो गया, data engineering हो गया, data modeling, they come under one umbrella that is data governance. जी, थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव। देखिए, एक इसमें आपकी प्रेजेंटेशन में था कि प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर का सही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ फिर आपने जब कंपैरिजंस पेश किए डेटा लेक के और लेक हाउस के वगैरह, उसमें 2-3 जगह आपने जिक्र किया कि पाइथन लैंग्वेज यूज की गई है इसको करने के लिए। तो ये बताइए कि इंडस्ट्री के लिए इस वक्त पाइथन जेंगो डेवलपर्स की अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में? अच्छे वैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन वो जो इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, और उसके अलावा वो क्या आपके ख्याल में पाइथन जेंगो डेवलपर्स ही इसको कर सकते हैं या और भी प्रोग्रामर्स हो सकते हैं इसको करने के लिए? सर, इसमें एक चीज तो थोड़ी सी जरा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जो कि मैं यहाँ पे I came back to Pakistan an year ago. I had been abroad for nearly 10 years. एक चीज जो यहाँ पे मैं, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे काफी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स बैठे हैं, लेकिन उनसे मेरा बड़ा इस चीज के ऊपर इख्तलाफ रहता है कि आर्किटेक्ट और प्रोग्रामर 2 डिफरेंट चीजें हैं और 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं। और मेरा लिटरली काफी ऑर्गेनाइजेशंस में क्लोज टू झगड़ा ही हो गया कि उनको ये बात समझाने में कि यार आर्किटेक्ट ही इज लाइक लुकिंग एट अ 360 व्यू। उसका हैंड्स ऑन होना, उसकी जावा, .NET, पाइथन डेवलपमेंट आना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। आप घर बनवाते हैं, आप एक अच्छे आर्किटेक्ट के पास जाते हैं जो कि आपको फैंसी चीजें बना के देता है, बताता है कि अच्छा यार ये टेक्निकल है, यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पे ये लेंटर डलना चाहिए। वो आर्किटेक्ट, सॉरी ये थोड़ी जरा गलत सी मिसाल हो जाएगी, लेकिन वो आर्किटेक्ट ने कभी मजदूर बन के ईंटें नहीं लगाई होती। वही फर्क एक प्रोग्रामर में कि वो हैंड्स ऑन है और आर्किटेक्ट वो नहीं है। सो विद ऑल ग्रेट रिस्पेक्ट टू ऑल द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस दैट आर्किटेक्ट इज अ डिफरेंट डोमेन, enterprise architect and data architect, they are different domains, and programmer is a different domain. अच्छा, इसीलिए मैंने आर्किटेक्चर की एक स्लाइड स्पेशली रखी थी कि यहाँ पे लोगों से मैं थोड़ी सी बात कर सकूं कि यार व्हाई आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट। टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच के अगर आप घर या बिल्डिंग बनाएंगे, वो नहीं सही कभी भी बनने वाली। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन फ्रॉम द पाइथन डेवलपमेंट, मेरा अपना ये ख्याल है, अगर आप के बेसिक्स सही है, एंड इफ यू आर स्ट्रांग विद द बेसिक्स, यू कैन कोड एंड यू कैन डेवलप इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, उसमें यह है कि आपका थोड़ा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या कुछ, जिस तरह जावा के अंदर कुछ सर्विसेज हैं या माइक्रो सर्विसेज, आपको वो थोड़ा सा जरा गैप आएगा। लेकिन अगर आपकी बेसिक्स ठीक है ना, यू कैन क्विकली लर्न ईच एंड एवरीथिंग। इंडस्ट्री के अंदर गुड पाइथन डेवलपर्स, एज आई सेड, सर मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज फॉर लास्ट 1 year आई हैड बीन एसोसिएटेड विद 2 organizations, और उसमें मेरी डोमेन काफी डिफरेंट रही है। वहां पे हाँ, जिन लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन रही, इट वाज वेरी गुड, वो बहुत अच्छे थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े जबरदस्त लोग थे, एंड दैट्स अबाउट इट।
So we have another question. What is the modern data stack according to you, and among dozens of tools which you would prefer to implement data governance? Depends upon the use case. Okay. आपका use case क्या है? ये चीज स्लाइड में भी मैंने मेंशन की थी. Understand the use case and then get your stack done. आप पहले अंडरस्टैंड करें आपने बनाना क्या है, आपका एंड रिजल्ट क्या है, आप अंडरस्टैंड करें कि आपकी डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपकी डेटा का इनफ्लक्स कितना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपका डेटा का इनफ्लक्स ही तकरीबन 10 GB है बट यू नीड अ हाई प्रोसेसिंग एजेंट, देन ऑब्वियसली उसमें रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी. अगर आप मेरे से शूट आउट पूछें that yes, which are the 2 tools or stacks that you personally prefer, I included them in my presentation, Snowflake and Databricks. I'm personally a fan of them. Although I come from a Databricks Teradata background, I've been working with them for 8 to 9 years across the globe. But yes, with the passage of time, technology changes, technology gets matured. Teradata is now not that much mature, jo Snowflake ho gaya. So that's the simple answer. Thank you. Thank you, Fahad. Any other questions? Thank you. No more questions. Thank you, guys.